हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग। आई होप ओवरऑल आप सब लोग का अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट पर्टिकुलरली 2024 में थोड़ा पैसा देने के मूड में है। वी आर सीइंग गेटिंग गुड ट्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम में। लुकिंग एट द वोलेटिलिटी का एडजस्ट करके भी वी आर गेटिंग क्वाइट ए गुड रिटर्न, और अच्छे अच्छे ट्रेंड्स मिल रहे हैं डिफरेंट मार्केट में। कमोडिटीज इंडिया में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास बहुत ही कम काउंटर है ट्रेडिंग के लिए, और इनको ट्रैक करना भी काफी आसान है, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू काउंटर्स, नॉट लाइक स्टॉक्स की हजारों, थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स। सो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। करंटली जो ट्रेड पे मैं हूँ ऑलरेडी, दैट इज क्रूड ऑयल ट्रेड, बढ़िया जा रहा है सो फार। इससे भी बढ़िया जा सकता है डेफिनेटली। इफ वी स्टार्ट सीइंग अ पुश ओवर अबव 6784 और सस्टेन करने लगा, डेफिनेटली दैट विल बी बुलिश फॉर क्रूड ऑयल फार्दर। और हम लोग फार्दर क्वांटिटी ऐड करेंगे। आई एम इनटू दिस फार्दर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन इंटरनेशनल मार्केट एंड along with that MCX as well. सो यहाँ पे जो दिख रहा है, दैट इज मोर ऑन द, दिस इज क्रूड ऑयल। इट्स इन द इंडियन MCX चार्ट, सो इट लुक्स बुलिश। इसके साथ साथ विल टेक ऑलवेज लुक एट द इंटरनेशनल चार्ट एज वेल, एंड इंटरनेशनल चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, दिस इज द रेनबो सेटअप बाय द वे। जो लोग न्यू कमर्स, दिस इज माय ट्रेडिंग सेटअप, दीज आर स्पेशलाइज्ड कैंडल्स। सो ये कैंडल प्राइस एक्शन दिखाते हैं अपने कलर चेंज से। सो दिस इज द टॉप मेजर लेवल 79.45, उसके ऊपर तो डेफिनेटली सस्टेन कर रहा है। उसके बाद ये और एक लेवल था 79.80, इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है क्रूड ऑयल। बट मेन इवेंट रेजिस्टेंस इज टुवर्ड्स 81.7, और चालू हो रहा है टुवर्ड्स 81.3 से। So it is still $1 away. So $1 move further we can see on the crude oil, and crude is likely to definitely test this region. It can go significantly bullish, like sudden jump. There is already trouble brew हो रहा है रेड सी में। लेटेस्ट अटैक में वेसल का सिंक हुआ है, और जो फाइनल क्रू है, क्रू को एग्जिट करना पड़ा। और मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो रेबल्स हैं, they used a very sophisticated system in a kind of way कि they used this non-manned boat, जिसको हम लोग ड्रोन कह सकते हैं, ड्रोन काइंड ऑफ बोट्स with explosive, and finally attacked the main hull of the ship. And it has really it was not possible to restart the ship, and finally crews had to be evacuated. So further the Middle East का जो टेंशन है वो continuously flare up कर रहा है, that is positive for crude oil. और क्रूड ऑयल कैसे ब्रेक हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ अ सडन स्पाइक ब्रेक बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन, एनी रीजन वी डोंट नो, देन डेफिनेटली टेक्निकली बोला जाए, एक फ्लैट लाइन, ऐसे फ्लैट स्ट्रेट ब्रेक का लॉट ऑफ टेक्निकली एनर्जी चला जाएगा। दैट मीन्स इट विल स्ट्रगल, ये जो लेवल $86 इसके आसपास, इवन इट कैन स्ट्रगल टुवर्ड्स 83। दूसरा और एक पॉसिबिलिटी, एज इट गोज अप इट स्ट्रगल्स, टेक्स टाइम इन द रेजिस्टेंस, एंड फाइनली समवेयर अराउंड अर्ली जुलाई, अराउंड 5th of July to 10th of July window, this can actually break higher from the slanting zone. Then definitely हम लोग अगर slanting zone से break हो रहा है, definitely we will see this test of this $86, and very likely it will push higher. So crude oil जो है इसका ऊपर जाना, जो लोग मेरे ग्लोबल वीडियो देखते हैं, आप लोग जानते ही हम लोग का इन्फ्लेशन, या फिर जो मेरे क्लास किए हैं, यू नो कि ये हमारे जो इन्फ्लेशन थ्योरी है इस टाइम का, विद इंटरेस्ट रेट शॉक, दिस कैन बिकम अ मोर रियलिटी। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स कैन गो अप. So crude oil, I'm closely watching, not just because I'm trading. This has much bigger implications in the current cycle, but also at the same time, it is positive in a way कि हम लोग similar pattern के जरिए जा रहे हैं। जैसे इक्विटी मार्केट फाइनल स्ट्रेच ऑफ द रैली पे पहुंचेगा, we usually see a sell off, we usually see a rise in crude oil along with the equities before it the
major crash or sell off hits us. तो क्रूड ऑयल वैसे पॉजिटिव जाना, इट्स नॉट नेसेसरली इमीडिएटली बियरिश फॉर इक्विटीज। तो इक्विटीज भी ऊपर जा सकते हैं, साथ में क्रूड ऑयल भी ऊपर जा सकते हैं। सो यूएस ऑयल, दिस इज द इंटरनेशनल चार्ट, इसके जरिए मैं नजर रखता हूं। बाकी जो ट्रेड है उसमें जिंक में आया है स्क्वायर ऑफ। यूजुअली आप लोग जानते हैं जो रेनबो सेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे ही इसमें बैकग्राउंड मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड न्यूट्रल हो जाता है, आई गो फॉर अ फुल एग्जिट। सो यहाँ पे जो भी शॉर्ट किया था दिस वाज अ फुल एग्जिट। सो जिंक में मेरा ब्रॉडली फुल एग्जिट चल रहा है करंटली। सो नो ट्रेड इन जिंक, स्टिल ऑन द कुड बी सम पोर्शन ऑन द बियरिश साइड। इट्स अ मिक्स मार्केट, ज्यादा चांस है कंसोलिडेशन का। I will require a more confirmation, a bigger momentum to the downside, and definitely एक फुल रेड कैंडल इन माय सेटअप फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। और साथ में मैं ट्रेंड भी थोड़ा बियरिश प्रेफर करूंगा टू डू फर्दर शॉर्ट इन जिंक। सो करंटली a neutral outlook है more in the zinc of for me, whereas that is not the case for aluminium. एल्यूमिनियम स्टेडीली नीचे जा रहा है, और तो एल्यूमिनियम में भी एक करेक्शन आ सकता है बिकॉज इट हैज रीच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, दैट इज द एम्प्टी लाइन। ये रेड लाइन है, एम्प्टी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, जो यहाँ से कम बैक वेरी मच लाइकली। बट मेन जो लेवल है दैट इज 226 फ्रॉम वेयर एल्यूमिनियम कैन मेक अ कम बैक। So this is looks like still bearish. So aluminium में जो short है, we can continue to hold, but also partially can book profit as it has reached an important line. But otherwise, no major reason to square off yet. It's not an outright sell, only 50% win probability. Preferred trades देखा जाए तो buy support, sell resistance. That's why it is a warning कि आप चाहो तो you can square off partial quantity. We'll look at lead. Lead में sell off is done with. जो beautiful sell off पहले चल रहा था, it is this once again proving to be a very important area. This is the long term line, trend line, and now it can bounce back. Now this can bounce back significantly if because if this line gives real support, it can definitely bounce back. This is a major opposite side support, mountain resistance का opposite है, mountain top resistance का trench bottom. This is a very strong support zone, और चालू होते ही जोन चालू होते ही इसको काफी बड़ा जोन है 184 to 187. If it drops further, ये जोन में ट्रैप हो सकता है, then further breakdown possible of after the zone. But currently it has reached the zone, और zone reach होते ही इसको सपोर्ट मिल रहा है बाई सपोर्ट की तरफ। So हो सके we will see a comeback. Let's see, I'm not in a buying mode unless I see a full green candle. Next is copper. Copper is another बढ़िया ट्रेड जो चलते जा रहा है। ये बहुत पहले मैंने हाईलाइट किया था इन ट्विटर, इन सोशल मीडियाज, जब पहले सिग्नल आ रहा था। नाउ वी हैव फर्दर फॉलन, क्वाइट अ गुड मूव। स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस काफी दूर है, स्टिल नो रीजन टू एग्जिट दिस ट्रेड। क्वांटिटी रिड्यूस करने का चांस आया था, बट इट्स स्टिल ब्रॉडली बियरिश, and very likely it is heading towards the next target, that is touching of this long term line. So whenever the touch happens, we might see a comeback in the opposite side. So touch ho sakta hai 831, we don't know where the touch will happen, but the main flat line support 813 पे, और ये जो levels break हो चुका है, ये flat line now will act as resistance 859, minimum stop loss 858, previous candle bottom भी एक resistance provide करेगा, that is around 850. तो हम लोग कॉपर में bearish प्रेफर करेंगे, ट्रेड्स जो रहेगा on the bearish side. Now comes gold and silver. Silver it is yet to break, देखे भी break नहीं दे रहा है, but outlook अभी bearish है। बिग प्लेयर जो है, द फंडामेंटल डेटा भी मैं देखता हूं तो उसमें दिख रहा है जो बिग प्लेयर्स है दे आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग पोजीशन। सो दिस इज सिल्वर में एग्जिट आ रहा है शॉर्ट के साइड लास्ट 2 दिन से, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल।
सो चांस है सिल्वर वही कंसोलिडेशन में रहेगा. दिस सेल ऑफ possibly have failed, but sellers अभी तक give in नहीं किए completely. I don't have a full green candle. तो buy trade का win probability ज्यादा है, long term trend भी buyers के साथ है. Still we don't have a signal to go for the buying. But currently what we can do is, if we are, whatever our position is, we can start reducing some of the quantity in silver and wait for further clarity. Like if I get a background yellow, I'll definitely make the full. If our background green, I'll definitely make the full exit. Gold, to like silver, even broke down. Candle chart dekhe to it was a breakdown, but gold did not give the breakdown on the lower side. It is consolidating. RSI इसको देख के लग रहा है it might go up, but still it's not in a great phase to go for a buying. Look at the buy trade win probability. It's just 7%. Consolidation होने का chance is the highest, that is the 71%. So currently, despite a full red candle, though I can go short, I'll not prefer to go short in gold. Rather, जो silver में मेरा short है, I'll prefer to now partially square off. जो and also the ETF, those are on the short side. Up international ETF के जरिए we can short silver, leverage short. So those will go for further exit. क्योंकि candle भी छोटा हो रहा है, we may get a reversal on the upside. Not a great trade, खास कुछ मिला ही नहीं कुछ जगह पे. In fact, marginal loss किसी को हो सके book करना पड़ा in this sell signal. So this is a very low key sell signal था. जब हम लोग ले रहे थे तभी भी पता था it was a very low probability sell. But it saw a big volatility because Fed was there. Federal Reserve का interest rate decision था और उसी दिन US का inflation data. Crude oil already हम लोग देख चुके हैं. It is quite bearish. Now अभी देखेंगे natural gas. Natural gas is giving some opposite side. Last कुछ दिनों से जो sell off हो रहा था उसका opposite movement दे रहा है natural gas. Currently I'm in a no trade in natural gas. I did not go for any trade right now. Though I tried this last trade I tried in this buy breakout, which finally did not started to working out. Now I have not tried the short side as there is no signal yet. But I'm now closely watching. I'll closely watching means I'm watching with these alerts. Rainbow buy signal, और अभी तो buy signal prevailing है. तो अभी जो चाहिए short trend bullish alert number 4.1 ये लगा दीजिए और साथ में कैंडल को फुल ग्रीन होने दीजिए. Then we'll go for long natural gas. सो ये रहे जो कुछ ही काउंटर्स हैं जो इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं. इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा है जहां पे डिफरेंट सेगमेंट है. फॉर एग्जांपल दिस वाज कोकोआ का फ्यूचर्स. जो लोग बाहर है नाइमेक्स में, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, इंटरनेशनल यूएस, ये जो कोकोआ का क्रेजी रन हुआ था, यू कुड हैव एंजॉयड दिस रन इन कोकोआ. सो दिस इज थैंक यू फॉर वाचिंग this commodity update with me. I'm SD, as you all know, Shanando Das. I'm a multi-asset trading and investment specialist. Thank you so much for watching this video. All the best to you from my side. And as always, happy trading.